नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ेका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और जो भी वीडियो आप हमें सजेस्ट करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में इंस्टा का लिंक मौजूद है, इंस्टा की आईडी मौजूद है, तो आप हमें रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। बिल्कुल। सो आज की हमारी वीडियो है एक म्यूजियम से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है WION विजिट्स प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम इन न्यू दिल्ली, WION टैग इट आउट। WION है ना? WION। Celebrate the world's most populous democracy. Experience the journey of independent India. Meet the architects of the country through the decades. Let's explore the legacies of India's prime ministers. The Pradhan Mantri Sangrahalaya is an endeavor by Prime Minister Narendra Modi aimed at inspiring the younger generations. The one-of-a-kind museum is located in Teen Murthy Bhavan in central Delhi. It has opened its doors to the public only recently. The museum is split into two parts: the Teen Murthy Bhavan heritage building that was once the house of Jawaharlal Nehru, and a newly constructed building that houses many exhibits and interactive experience zones. This museum consists of two parts. One is in the heritage building behind me, and the other wing is in the newly constructed building right over here. Now, this has just opened to the public last month, and we are here to explore all the exciting tech behind the exhibits at the museum. Let's take a look. We are here to meet Saurav Baik, the CEO of Tagbin, which is one of the companies that developed the exhibits at this museum. Saurav. Welcome, Johan. Welcome to Pradhan Mantri Sangrahalaya. So you're the man behind this entire... There's an entire team, yes. Our company was responsible for the design and technology of this project. Otherwise, there were almost 500 people who have worked on this project. So there's a lot of people involved in this, and there's a lot of moving parts in this museum. What are we looking at here? What you see is a national emblem. That's levitating in the air. Yes, exactly. This is a work of art and technology. The way it works is that it has two electromagnets, and they are synchronized in such a manner that it never goes out of its field. The levitating national emblem makes for a striking first impression. The cool technology has been used all over the museum. Just beyond the kinetic flags, there is a mysterious exhibit. It's called Time Machine. Here visitors get to relive the past. You can see India change before your eyes. In this room, there are 9 4K laser projectors. They create a nearly 360-degree field of view. The display showcases many defining moments in the country's history. Next up is the engagement zone. For most visitors, this is perhaps the most exciting part of the museum. I take it this is one of the more popular exhibits. This is a place where like a visitor can click a picture with any prime minister of his choice. The setup is designed as if this is like a meeting room of a prime minister's office. We see a picture of prime minister in such kind of an environment. Can I try with Modi? Yes, we will do that for you. Is he the most popular as well? I think 95% of the visitor prefer Prime Minister Modi. But he's also the current one, so it makes this photo like the most believable, I think. Yes, exactly, that's also the reason behind it. I'm going to choose Narendra Modi. You have to look at the camera. Okay. Yes, you are at the right angle. So 3, 2, 1. And here is your picture. You can come and see it. Oh, that is brilliant. So you can share it. What's your email? All right. It is in your email ID That's now. all automated. This is one of the several interesting exhibits in the experience zone. You can also wander about and greet your favorite Indian Prime Minister. The video will be emailed to you. In another exhibit, you can hold hands virtually with a chain of people.
You can also end up on the Wall of Unity while holding hands with other visitors. Receive a handwritten letter from your favorite Prime Minister. The way we have done, we have actually digged out letters, handwritten letters, and have done a machine learning and image processing on top of it. And then on the basis of that, we have understood the way they write. And then it will write a customized message for you, and then it will be a signed signature. Which Prime Minister you want to try? I'm going with Modi here as well. Again, okay. It will write your name in the handwriting of Prime Minister Modi. The same handwriting of Prime Minister. That's quite something. And then it will sign in the bottom. In total, they had around 200 letters from each Prime Minister. This is how it is. You can see it, your name and the signature of Prime Minister. Feel like I should not damage this document. You can frame it and you can keep it safe with you. Do you have a framing service also? Not currently, but we would have it in the future. Very precious. Yeah. In another exhibit in the Experience Zone, you can color a rocket that can be scanned into a computer. Visitors can see the rocket take off from Earth on India's missions to space. And this is not the only exhibit that is focused on India's future. So this zone is called a helicopter zone. Here what we are doing is basically we are taking visitor to the future of India. So we will fly across different iconic projects which will be completed in future, and whenever the visitor sits here, it takes them to the right into the future. We have a kinetic system on which this basically the whole system moves, and the videos are actually synced with the motion of this helicopter ride. So do you want to go on a ride? Yeah. Let's fly away. Okay, let's start, and we will turn off the lights and let's start. While most museums are focused on the past, at the Pradhan Mantri Sangrahalaya, the visitor can get an insight into India's tomorrow. And even contribute towards a vision of where India will be after 100 years of gaining independence. So what do we have here? Write your vision for India 2047. So this particular exhibit is about where visitors can come in and they can write their vision for India in 2047 when India will complete the 100 years of its independence. The way this works is that any visitor can come in, click their picture, write their name and give a message how they perceive that India will be in 2047. And what we are doing here is that we are collecting all the feedbacks and doing again machine learning on it and giving it to the Prime Minister's office that this is the wish and want of the people of India, that this is what they want you to do. So this kind of become a kind of a tool for a policy making because we will be collecting lots of feedback here. So let's do it. In India, if I'll write this, Right. this for will the pharma industry to yeah, boom. this will pick up the pharma thing. Okay. And then we submit it. All right. It will automatically come here. Oh, So for there's example, we are doing a machine learning on the text part of it, and then finding out the most repeated kind of suggestions, and then creating a chart and bar graph that this is what people are asking about. Until now, over 60,000 inputs have been given by visitors to the museum. They plan to submit the findings to the Prime Minister's office after getting around 100,000 suggestions. Saurav also shows me the exhibit for the Pokhran nuclear test. The room has been set up like a control room. When the explosion happens, the entire platform that we stand on starts shaking. There are so many exhibits and activities. I'm curious about the back-end operations. How do they ensure that all the exhibits stay online at all times? So this is the back end of how all this comes together, huh? This is the control room where we control all the devices. What we have here is the content upload. That means we pick up any exhibit, and if you wanted to change the video, we can simply drag and drop here, and the change will get reflected in that particular exhibit. The entire museum is on a single network, and it has a IoT devices which basically tells the temperature of it, the CPU usage of it,
and also the status of it, and that is what is being shown here. I'll give you one of those audio guides. This is for you. You can take it. We have a headphone along with them, so you can experience the museum on your own. All right. Well, thank you so much for the tour. It's been absolute pleasure to see the museum. I'll just check out the rest of the exhibits on my own. Okay, thank you. All right. Thank you. This audio guide is more advanced than what I've seen in other museums around the world. Here the guide is synced with your movement inside the museum, and it plays the right explainer when you reach the exhibit. Currently, you can select either of the two languages, English or Hindi, but there are plans to add 6 international and 22 Indian languages to the system in the coming months. After a long but rewarding day at the museum, it is time to leave the Pradhan Mantri Sangrahalaya. To sum up my experience, the exhibits are world-class. I've got a crash course in India's fascinating history and its inspiring premieres, past and present. जी जनाब, जी जनाब, मैं हैरान हूँ, ऐसा टैलेंट कहाँ से आता है इन लोगों के पास? ऐसी टेक्नोलॉजी यूज हुई है। टेक्नोलॉजी, लेकिन कोई सोचा, किसी के दिमाग में आया कि ऐसा म्यूजियम होना चाहिए। अच्छा, कोई एक चीज़ यूनिक हो तो वैसे ही लोगों का अंबार आ जाता है। कोई एक चीज़ भी यूनिक कर दें, आप स्पेशल कर दें, तो लोग वैसे ही टूट पड़ते हैं। यहाँ तो एक से बढ़कर एक चीज़ है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, पहले जो हमने देखा था कि पूरी डॉक्यूमेंट्रीज चल रही थी, ये उससे ज़्यादा एडवांस लग रहा है, उससे कहीं ज़्यादा। तो ये वही है, थोड़ा सा अपग्रेड हुआ है या वही कोई और था, ये कोई और है? उसमें मुझे ऐसा लग रहा है डिटेल नहीं थी, मतलब डिटेल से हर चीज़ बारी बारी नहीं दिखाई गई थी। उसमें बस एक बच्चों का दिखा दिया गया था कि बच्चे मूवीज़ को देख रहे हैं, मोदी जी हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये वही है। हाँ, वही लग रहा है, वही लग रहा है, एडवांस हुआ है थोड़ा। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि आप पूरी हिस्ट्री देख सकते हो। ऐसा लग रहा है आप उड़ रहे हो और पूरा इंडिया देख रहे हो, फ्यूचर का इंडिया देख रहे हो। दोनों, मुझे ऐसा लग रहा है दोनों साइड से वाकई रोड जा रहे हैं और मैं बीच में सफ़र कर रही हूँ। अच्छा, मोदी जी के रियल साइन हो रहे हैं। मेरे तो जहन में फ़ौरन ही घंटी बजी कि आप इसको मिसयूज़ भी कर सकते हैं क्या? मोदी जी ने अपॉइंट कर दिया आपको। हाँ, मोदी जी मिसयूज़ भी हो सकता है। लेकिन वो एक वो होता है ना, जो स्टैम्प पेपर वगैरह यूज़ होता है, ये चीज़ें जो यूज़ होती हैं वो ऑफिशियल अलग ही होता है। हाँ, ठीक है, लेकिन ये कोई मतलब है कि एक वेरीफाइड हो जाता है वो आराम से, उसका कोई मसला लेकिन नहीं। साइन लोग को भी लोग कॉपी कर सकते हैं, मतलब हमारे ऐसे भी लोग साइन की भी वेरिफिकेशन हो जाती है, टेंशन ना ले। अच्छा, जितना भी इंसान कॉपी करे, जितना भी जिद्दत ले आए, लेकिन जो रियल है वो रियल है, जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल है। ऐसी बात है, पीएम के साइन के लिए लुक का लाइक सेम होगा, लेकिन जाहिर सी बात है वेरिफिकेशन हो, वेरिफिकेशन तो हो जाती है, कोई मसला। लेकिन मैं कहता हूँ इतनी जदीद टेक्नोलॉजी इन्होंने, ये जो क्या कहते हैं अपना टेक्नोलॉजी, एडिटिंग और किस तरीके से रियल को वीडियो के साथ अटैच करना, 4 लोग खड़े हुए तो उनका हाथ पकड़ के किसी तरह वीडियो के अंदर आपको पहुंचा दिया फ़ौरन, ठीक है। चेयर वाला देखा था? मैं हैरान हूँ, मेरी चीखें निकल गई थी वहाँ तो। अच्छा, कह रहे हैं कौन सी टेक्नोलॉजी, हम तो सोच भी नहीं रहे, हमारा तो दिमाग भी नहीं जाता भूले बैठ के। अच्छा, कह रहे हैं कि आप किस पीएम के साथ तस्वीर खिंचाना चाहेंगे। ये मीटिंग रूम होता है, वो रियल होता है, ऐसा ही होता है, कह रहे हैं। अक्सर हमने तस्वीरों में भी देखा, न्यूज़ में भी देखा। अच्छा, पिक्चर के बाद कोई भी नहीं कह सकता कि ये पीएम मोदी जी के साथ नहीं बैठे हुए। 95% रियल लग रहे थे, उन्होंने खुद बोला। बिल्कुल, और 95% वो कह रहे थे कि लोग मोदी जी के साथ पिक्चर बनाना चाह रहे हैं। यानी कि लोग आते हैं, आपको किसके साथ पिक्चर बनानी है, आपको किसके साथ। तो अच्छा, हर दिल अजीज है ना वो। देखो, 2 चीज़ें हैं। अगर एक शख्स कोई बहुत ही पुराने पीएम के साथ तस्वीर खिंचाना चाहेंगे, मिसाल के तौर पर लाल बहादुर शास्त्री के साथ, मिसाल के तौर पर, तो लोग मानेंगे नहीं। लोग कहेंगे कि आप इतने पुराने हो या जो तस्वीर में बैठा हुआ है आपका जन्म हुआ है दोबारा। अब पहले सबसे पहले तो यही बात आएगी कि वो तो रियल नहीं है। मोदी जी का तो कोई मान भी लेगा भूले बैठ के कि मोदी जी तो वैसे ही आवाम को इतने दिल अजीज हैं, आवाम के लिए इतना करते हैं कि वो कहीं मिल गए होंगे तो ले ली होगी पिक्चर, ये चले गए। वैसे एक बात बताऊँ, मीटिंग रूम देख के तो यकीन नहीं आएगा मोदी जी का भी। नहीं हो सकता है कि कोई बहुत ही टैलेंटेड बंदा हो, क्योंकि मोदी जी किसी से भी मिलते हैं ना, कोई टैलेंटेड, कोई आईटी से कोई बड़ा शख्सियत है, कोई बहुत ही ज़्यादा इंटरप्रेन्योर है, कोई बहुत ही ज़्यादा चीज़, फेयर हुआ, कोई रोड वगैरह पे आए, कोई उद्घाटन में आए तो समझ आता है। ऐसे अपने मीटिंग रूम में बिठा उस शख्स की तस्वीर मोदी जी के साथ बन सकती है। मैं कह रहा हूँ किसी ने कोई बड़ी एप्लीकेशन बनाई, कुछ इस तरीके से काम किया है, वो तो रियल में भी अप्रोच कर सकता है, वो रियल में भी, फिर उसकी पिक्चर भी रियल लग भी सकती है। लेकिन हम जैसे आम लोग, उनके लिए तो फिर वो लोग नहीं मानेंगे। हम जैसे कुछ भी कह रहे, हम जैसे, हाँ, हम जैसे बड़े ऑर्डिनरी से लोग हैं। अच्छा, ये एक व्लॉग था जिन्होंने बड़ी डिटेल से चीज़ों को बताया।
अच्छा, एक चीज़ मुझे इनकी बहुत अच्छी लगती है कि इस तरह की जो गवर्नमेंट की चीज़ें होती हैं, कभी कोई इदारे होते हैं, यहाँ पे ये लोग कैमरा अलाउ करते हैं। मैं कहता हूँ हमारे यहाँ तो ज़रा सा कोई अगर इस तरह का सेंसिटिव, इसको मैं सेंसिटिव ही कहूँगा, कैमरा मोबाइल से वीडियो क्यों बन रही है, डर जाते हैं लोग। मतलब हमारे यहाँ इंतज़ामिया जो है वो मतलब सख्ती से नहीं, कैमरा अभी भी हम लोग, हमारे यहाँ लोग कैमरा कॉन्शियस हैं, हमें कैमरे से वीडियो बना रहे हो, अच्छा वो आपको शक की नज़रों से देखेगा। अगर आप रोड पे कोई वीडियो अच्छा अभी भी हमारे यहाँ रोड पे कोई वीडियो बना रहा होता है ना किसी चीज़ की, तो 4 लोग लाजमी उसको देखते हैं मोबाइल से कि यार इस शॉप की वीडियो बना रहे हो आप। वो आपने उनका शो देखा, वो जो नादिर शाह के साथ आते थे, दूसरे वाले नादिर अली नहीं, उनके साथ एक और थे, बहुत सारे होते थे उनके साथ। आमिर बाबा भी थे और एक मूंछों वाले भी हैं, मूंछों वाले भी हैं एक, बहुत अच्छा नाम है उनका। खैर मैं बाय नेम याद नहीं आ रहा मुझे। अभी मैंने परसों का एक व्लॉग देखा उनकी, प्रैंक हाँ प्रैंक करते रहते हैं। तो नहीं, वो क्वेश्चंस पूछते हैं, ऐसा कैसे है वैसा कैसे है। तो ना वो किसी से कोई क्वेश्चन पूछने के लिए गए, तो एक बाबा से थे, तो वो बैठे हुए थे शॉप खोलकर। तो शॉप का जो है ना अंदर की तरफ नहीं गए, वो बाहरी की तरफ वो फट्टे के ऊपर बैठे हुए थे, फट्टा टाइप बना हुआ था। तो वो ऐसे ही माइक लेके चले गए उनके पास पूछने के लिए, पाकिस्तान के हवाले के वो हालात के हवाले से। तो उनके पास गए, उन्होंने उनको ऐसे ऐसे मोड़ा, कह रहा भाई जाओ जाओ। गुस्सा में अरे मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा मतलब यानी कि कितनी ज़लालत है। और वो ऐसे धक्का मारता है ना किसी को कि 2-4 कदम बंदा चल जाता है। तो अच्छा कह रहे हैं, अच्छा वो इतने शर्मिंदा हुए, कह रहे अच्छा ठीक है, वो ऐसे चलेगा आगे। अच्छा, मैंने इत्तफाक से एक क्लिप देखा कि एक फ़नी वीडियो बना रहा था शायद बंदा, माइक हाथ में लेके किसी शॉप वाले के साथ बात कर रही है। तो बंदा माइक में हाथ लेके लड़की की आवाज़ में लड़की के करीब आके कह रहा है अस्सलाम वालेकुम, लड़की की आवाज़ में कह रहा है, लड़की का फेस इधर है, फिर लड़की उधर देखे बगैर सलाम का जवाब देती है, वालेकुम सलाम, जैसे दिखती लड़का थप्पड़ मार देती है। ना उसने माइक देखा, ना कोई इंटरव्यू करने वाले को देखा, यूँ खड़ी हुई है कुछ कर रही है। तो लड़का आ रहा है, पीछे कैमरामैन भी आ रहा है, तो डायरेक्ट यूँ बुला रहा है अपने कैमरामैन को, माइक वाला, आ जाओ लड़की से पूछते हैं। लड़की के करीब जाके लड़की की आवाज़ में बोल दिया अस्सलाम वालेकुम। अब जब मुड़ के देख सलाम वालेकुम सलाम, जब मुड़ के दिखती लड़की तो लड़का है, थप्पड़ देखे बगैर ही थप्पड़ लगेगा। माइक है, कोई प्रैंक कर रहा है मुझसे, कुछ सवाल करने आया लड़की की आवाज़ में, आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ अभी लोगों को ये सेंस ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है कि यार टेक्नोलॉजी क्या है, कैमरा क्या है। लोग अभी तक इससे डरते हैं, जबकि लोग सच भी हैं। मतलब कोई चोरी थोड़ी कर रहे हो, कोई शराब चरस से हीरोइन थोड़ी बेच रहे हो, आपकी कैमरे से कोई वीडियो बना रहा है, आपसे कोई बात कर रहा है, कोई क्रिमिनल हो क्या हो, लोग डरते हैं, पता नहीं मेरी वीडियो कहाँ चली जाएगी, पता नहीं ये वो, पता नहीं वो। अक्सर मैंने देखा है, लेकिन यहाँ देखा है कि नॉर्मल लोग आके व्लॉग्स बना सकते हैं इतनी बेहतरीन जगह पर। जो सीईओ थे मैंने देखा वो इतने कोऑपरेटिव थे, आपने देखा एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अच्छा उनके साथ साथ रहे हर जगह कि कैसे एक्सपीरियंस हो, कैसे मतलब गाइड करना, प्रॉपर्ली गाइड करना, आप ये कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, ये भी है, इसको ये कहा जाता है, जगह को ये कहा जाता है। मुझे इतना कोऑपरेटिव लगा उनका बिहेवियर, बहुत ही ज़्यादा, इतने कोऑपरेशन के साथ वो बात कर रहे हैं। आपने बहुत पहले भी बताया था कि एक दोस्तों के साथ आप गई थी मॉल में, तो आपने ज़रा सेल्फी ली, क्योंकि अब तो काफ़ी पुरानी बात हो गई तो दोबारा दोहरा सकते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है नए सब्सक्राइबर भी जुड़ते हैं ना। अच्छा आप कह रहे हैं मैं रिपीट कर दूँ जल्दी से। अच्छा तो हुआ ये था कि मैं मेरी यूनी की बात है कि मैं यूनी से अपनी ये सारे फ्रेंड्स के साथ हम शॉपिंग करने चले गए मॉल में। तो उस मॉल के अंदर हम जैसे गए, बहुत बड़ा मॉल नहीं था, नामी ग्रामी मॉल नहीं था, नॉर्मल सा मॉल था, तो हमारी यूनी के रोड पे ही पड़ता था। हम चले गए, अब हम चले गए तो पीछे ना फवाद खान था, तो वो हमारा बड़ा फेवरेट था, अब नहीं है खैर। तो फिर वो था, तो मेरी फ्रेंड कहने लगी कि सिद्रा इसके साथ एक सेल्फी ले लेते हैं, इनका बहुत अच्छा लग रहा है, पोस्टर बड़ा सा आर पार लगा हुआ था। तो हम उनके साइड खड़े होकर और ना सेल्फी लेने लगे। तो जो भी स्टाफ था, जो भी मैनेजर थे, जो भी थे, वो सारे आ गए और उन्होंने हमें घेर लिया। और उसके बाद कहने लगे कि नहीं मैम सेल्फी अलाउ नहीं है। तो मतलब फ़ौरन उन्होंने कहा आप मोबाइल रखें, मोबाइल फ़ोन अलाउ ही नहीं है, सेल्फी अलाउ नहीं है। तो फिर हमें इतनी शर्मिंदगी फील हुई, हमने कहा मतलब एक सेल्फी भी, आप एक मॉल के अंदर एक सेल्फी नहीं ले सकते हो, इतनी पाबंदी है, मतलब हम क्या कर लेते हो उस सेल्फी। मैं वही देख रहा हूँ कि जैसे रेलवे स्टेशन बना था, हमने व्लॉग देखा, कहीं लोग कहाँ जाके व्लॉग बनाते हैं, सेंसिटिव जगह होती हैं, लेकिन कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ मैं अक्सर देखता हूँ कि लोग कैमरे से डरते हैं। लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर्स म्यूज़ियम, सबसे पहले तो ये आइडिया इतना ज़बरदस्त, और जिसको भी इंडिया के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए हो, उस वहाँ की सियासत के बारे में, और स्टेप बाय स्टेप कौन प्राइम मिनिस्टर थे, किस तरह के थे, किसकी क्या नेचर थी, सारी हिस्ट्री मैं कहता हूँ यहाँ आके, और स्कूल कॉलेजेस के जो बंदे हैं, बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं हिस्ट्री के हवाले से और करंट अफेयर्स के हवाले से, अपने कंट्री के हवाले से, तो मैं कहता हूँ उनके लिए एक ऐसी जगह है जो विजुअलाइज
मैं कहता हूँ जो होता है वो जितना याद रहेगा। इनके लिए, इनके अंदर एक और बात है, मैंने एक चीज़ देखी कि हिस्ट्री में बड़ा मतलब इंटरेस्ट है इनके आप, और अपनी आने वाली जो नस्लें हैं, जो अपनी आने वाली औलादें हैं, उनको भी बहुत राग़िब करते हैं इस चीज़ की तरफ। अब हम लोग हैं, मैं स्लाइटली बड़ा कंफ्यूज रहती थी 1971 1971 में क्या हुआ था और 1973 में क्या हुआ था। अब कोई मुझसे पूछता था तो मुझे समझ नहीं आता था 1971 का क्या बताऊँ और 1973 का क्या बताऊँ। बाद में जाके बड़ा मुझे पता चला कॉन्स्टिट्यूशन आया था 1973 में, 1971 में वॉर हुई थी। तो इस चीज़ को ही लेके मेरे साथ तो इतने अरसे तक कन्फ्यूजन रहा। हमारी हिस्ट्री को लेकर हमारी पीएचडी वगैरह में इतना ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता, हमारे पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है उसको लेकर इतना जोर नहीं दिया जाता। जो एक अखंड भारत था, जो एक हिंदुस्तान था, मुत्तहद हिंदुस्तान, जब हम सब एक साथ थे, उस दौर के बारे में भी ज़्यादा बात नहीं की जाती। अच्छा, उनके यहाँ देखें एक म्यूज़ियम भी है, तो उसमें भी एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई जा रही है, हिस्ट्री के हवाले से सारे हीरोज़ दिखाए जा रहे हैं, तो याद रह जाएगा, टाइम टू टाइम आपके माइंड में बैठ जाएगा ना। आपको पता होगा कब क्या हुआ था, आपको पता होगा कौन प्राइम मिनिस्टर था। आप मुझे कुछ बताएंगी और मैं वीडियो में देखूंगा तो वो मुझे ज़्यादा बेहतर याद रहेगा। तो मैं कहता हूँ बेहतरीन टेक्नोलॉजी अगर देखनी है और आज की टेक्नोलॉजी ने कितनी तरक्की कर ली वो देखनी है तो मैं कहता हूँ इंडिया चला जाए। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, दोबारा किसी वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।